previous classes videos we have understood and obtained the expression for electric potential due to a dipole. Let us start today a new topic, equipotential surface. ये समविभव सतह इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड एनी सरफेस, कोई भी सतह which have the same electric potential at every point on it. It means वैसा कोई सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है. Any surface having the same equipotential at every point on it is called an equipotential surface. The example, the surface of a charged conductor. The surface of a charged conductor is a good example of equipotential surface. Here we have sketched different equipotential surfaces. This is equipotential surface of a positive point charge, and this one equipotential surfaces of two equal and opposite point charges. यहाँ पर this is a positive point charge is placed in a space, and these lines, straight lines, represent the electric lines of force, whereas the curved lines, these curved lines है, ये क्या represent कर रहा है? These curved lines, curved concentric lines represent the equipotential surfaces. These curved lines represent equipotential surfaces. They are concentric spherical cells. These curved lines, ये curved line जो है वो represent कर रहा है concentric spherical cells having their centers at the positive point charge. So this is equipotential surface of a positive point charge. In this case here, two equal and opposite point charge has been placed in a space separated by some distance. There is a positive charge and there is negative charge. So these lines, full curved lines, these full curved lines represent the electric lines of force. From positive charge, electric lines of force, पॉजिटिव चार्ज से, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड कर रही है. सो दिस फुल कर्व लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड दिस डैश्ड कर्व लाइंस represent the electric lines of force in two equal and opposite point charges. So these are the equipotential surfaces in the two cases. Here are some important properties of equipotential surfaces. इक्विपोटेंशियल समविभव सतह के कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या क्या है देखें. फर्स्ट इज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इट मींस व्हेन वी विल कंसीडर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देयर नो वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज. क्यों? मतलब कोई भी समविभव सतह में किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव कराने में कोई कार्य नहीं होता है. व्हाई दिस इज सो? ऐसा इसलिए होता है
कि in equipotential surfaces at every point have the same potentials. प्रत्येक बिंदु पर समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है. There is equal potential, समान विभव होता है, सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है, समान विद्युत विभव होता है. इसलिए so there is no work is done in moving a test charge from one point to one. Is clear? Next is electric field is always normal to the equipotential surface at every point. As we know, electric field, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, हमेशा किसी भी समविभव सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, हमेशा लंबवत होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा लंबवत होता है. At every point, electric field is always normal to the equipotential surface at every point. Next is equipotential surface are close together in the regions of a strong field and farther apart in the regions of weak field. Let us understand this. इसको समझते हैं कि equipotential surfaces जो होगा, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर नजदीक क्लोज होगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेस वहां पे क्लोज होगा, और जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे थोड़ा दूर होगा. व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्यों होता है? वी अंडरस्टैंड दिस. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दैट इज गिवन बाय E is equal to minus dV by dr. This is the relation between electric field and electric potential. या एक संबंध है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल के बीच का. This is called potential gradient. This is called also potential gradient, dV by dr. It means change in the magnitude of electric potential per unit displacement. This potential gradient is change in the magnitude of electric potential per unit displacement. By this relation we can find dr is equal to dV minus dV upon E. देखिए यहाँ पर this is electric field and this is change in the magnitude of electric potential. So for a strong electric field, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, E का वैल्यू जहां पे अधिक होगा, we will have the relation dr upon 1 by dr proportional 1 upon E. It means जहाँ strong electric field होगा वहाँ पर this displacement will be smaller. It means the equipotential surfaces will be close to, नजदीक होगा, कम दूरी में होगा, कम वैल्यू कम होगा. And wherever value of electric field will be weak, जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा वहां पे ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा. सो दिस इज equipotential surfaces are close together in the regions of a strong field and further apart in the regions of weak field. Next properties of equipotential surfaces: no two equipotential surfaces can intersect each other, just like no two electric lines of force can intersect each other. जैसे कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्रॉस नहीं कर सकती. ठीक उसी प्रकार कोई भी दो इक्विपोटेंशियल, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द केस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड इन द केस ऑफ
two equal and opposite points are separated by some distance, जो यहाँ पे डैश लाइन था और यहाँ पे कर्व लाइंस था, तो कोई भी कर्व जो स्फेरिकल सरफेसेस स्फेरिकल सेल जो था इन द केस ऑफ a positive equipotential surfaces in the case of positive point charge, जो कर्व लाइंस था they represent a spherical cells, वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्फेरिकल सेल्स विथ देयर सेंटर्स एट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड नो टू इक्विपोटेंशियल नो टू स्फेरिकल सेल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो स्फेरिकल सेल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी जो डैश लाइंस था डैश कर्व लाइंस था टू पॉइंट चार्जेस केस में, वो भी दो कोई भी स्फेरिकल सेल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज नॉट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी तो समविभव सतह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, नहीं काटेगा। सो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट we can understand what is the importance of equipotential surfaces, इसका क्या महत्व है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का महत्व क्या है। This is the importance of equipotential surfaces. Like electric lines of force, the equipotential surface give a visual picture of both the direction and magnitude of electric field in a region of a space. It means this इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखाओं के जैसा ही यह एक विजुअल पिक्चर प्रस्तुत करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस। लेट अस स्टार्ट our new topic, electric potential energy or electrostatic potential energy. Potential energy, just like we have understood in class 11, potential energy, gravitational potential energy, जिसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और gravitational potential energy गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। That is defined as potential energy, that is defined as energy possessed by a body, मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यार इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर हम लोग समझेंगे विद्युत विभव ऊर्जा और स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। We have also understood potential, electric potential, हम लोगों ने समझा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीज क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन in moving a positive point charge from infinity to a point in an electric field against the electrostatic forces. It means कि कोई किसी बिंदु आवेश को किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी दिए गए बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र के दिए गए बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। वहां पे क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, किया गया कार्य है। एज वी नो दैट वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट। वर्क किया गया कार्य, किसी भी वस्तु में जो किया गया कार्य है, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, वही जो है वस्तु में ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। दैट इज सो वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, दोनों समतुल्य है, एक ही जैसा वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
यहाँ पे है किया गया कार्य, और यहाँ पे होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी will be defined as the amount of energy in moving a charge from one point, from infinity to a point. इस केस में amount of work done था, इस केस में amount of energy होगा. So we write the definition of electric potential energy. Electric potential energy is defined as the amount of defined as the amount of energy required to move a charge from infinity amount of charge from infinity to a point in an electric field against the electrostatic forces. So this is the definition of electric potential energy. For a system of point charge, this is the definition of electric potential energy for a point charge. किसी एक बिंदु आवेश के लिए यह परिभाषा है। लेकिन जब there will be system of point charge, बहुत सारा point charge होगा एक साथ, तब उसका definition कैसे होगा? For a system of point charges, for a system of point charges, electric potential energy is defined as the amount of work done, defined as the amount of work done in assembly, amount of work done in assembling the charges by assembling the charges by bringing them close together, from infinite distances in space. This is the definition of electric potential energy for a system of point charges. It means एक साथ बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये परिभाषा है कि बहुत सारे चार्जेस जो स्पेस में दूर दूर हैं, अनंत से एक साथ
टुगेदर एक साथ असेंबल करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. This electric potential energy, as we know that energy is a scalar quantity, so this electric potential energy or electrostatic potential energy is also a scalar quantity. It has the SI unit, same SI unit as the energy. जैसा एनर्जी ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वही विद्युत विभव ऊर्जा का SI मात्रक होता है. It means its SI unit is joule. SI unit is joule. You write SI unit joule. Full, if you write full joule, then it will start from small j, and if you write a single letter, then there will be capital J. This joule is the named SI unit of potential energy is the named after the English physicist James Prescott Joule. The SI unit of electric potential energy is named after the English physicist James Prescott Joule. उनका पूरा नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल. उन्हीं के नाम पर ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक रखा गया है. It's in serious system, it is serious unit, serious system. In serious system, the unit of electric potential energy is erg, and there is a relation between joule and erg. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, or 1 erg equal to 10 to the power minus 7 joule. So these are the SI units, and in serious system unit of electric potential energy. There is another unit of electric potential energy that is very important unit used in numericals, electron volt. Another unit of electric potential energy is electron volt. EV, in short it is written as EV, short में EV लिखते हैं. In MCQ questions, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, आवेश का, ऊर्जा का, एंड अदर्स. Here it is clear that electron volt is a unit of electric potential energy, or simply we can say electron volt is a unit of energy. Why it is so? ऐसा क्यों होता है? Why this is unit? ये clear? We see that since V electric potential is defined as V is equal to work done moving up unit positive charge, so it is V is equal to W by Q. This work is also equivalent to energy, and here we can write W is equal to QV. W is equal to QV. So if we put here Q is
coulomb, q charge, SI unit of charge is coulomb. So if we put here 1 coulomb or 1 electron, if we put here, यहाँ पे q का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये v is the potential difference has unit volt. So 1 electron, there will be 1 electron volt will be equal to 1 electron, charge on 1 electron is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. So 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. Let us understand what will be its dimension. Just like work, as you know, work and energy are equivalent. वर्क और कार्य और ऊर्जा दोनों समतुल्य हैं, तो जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा. आल्सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन वही होगा. डायमेंशन it will be equal to ml square t to the power minus 2. This is the dimension of electric potential energy. Let us see what is the relation between electric potential energy and electric potential. Relation between electric potential energy and electric potential. Relation between electric potential energy and electric potential. By the definition of electric potential, we have by the definition of electric potential, we have V is equal to work done per unit charge, work done in body का positive charge. By this relation, we have W is equal to QV or VQ. Where Q is charge, V is V for electric potential. This work done is stored. This work done is stored as the potential energy of the charge Q. You can write this work done is stored as the PE, potential energy of the charge Q. It means ये जो वर्क होता है, वर्क डन किया गया कार्य एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
this work done is stored, स्थिर होता है, यह किया गया कार्य स्थिर होता है विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में, चार्ज q के विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में स्थिर स्टोर्ड होता है। Therefore we can write this work done as electric potential energy. Therefore E will be equal to work done, this will be equal to QV, that is potential energy of a charge, right? That is electric potential energy of a charge, electric potential energy of a charge in an electric field, charge in an electric field is equal to charge, here is charge and this is potential, charge into electric potential. So from this relation we can find, hence from this relation we can find, as here is E is equal to, we write here electric potential energy as capital U, electric potential energy as capital U. So from this relation we can write V is equal to U upon Q, V is equal to U upon Q, just like V is equal to, we have V is equal to W by Q. So W was the work done, and as the work done is work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electric field against the electrostatic force, that is stored, that work done is stored as electric potential energy of the charge Q. So this become work done is equal to electric potential energy. So here we have written V is equal to U by Q. Here U represents the electric potential energy. Thus we can define electric potential, thus electric potential may also be defined as the amount of energy, of a unit charge. This represents the relation between electric potential and electric potential energy. Now you will find an expression for electric potential energy
for a system of 2-point charges. We will find an expression for electric potential energy for a system of 2-point charges. Electric potential energy for a system of 2-point charges. Here we have to obtain an expression for electric potential energy for 2-point charges. As shown in the diagram here, चित्र में जैसा डिपिक्ट किया गया है, P1, P2 at the point P1, here is a point charge Q1 at rest. This point charge Q1 is at rest at the point P1 in a space, and at the here another charge Q2, another charge, दूसरा point charge Q2 है, which has to move, जिसको लाना है at the point P2 from infinity. एक Q2 दूसरा चार्ज है जिसको लाया जाना है at the point P2 in a space from infinity, and here R12 is the distance between the 2 points. R12 दो पॉइंट P1 और P2 के बीच की दूरी है. Then the work done by first charge Q1, this point charge Q1 is at rest at the point P1 in a space. So what will be the work done by this point charge Q1? Q1 के द्वारा work done क्या होगा? As this point charge Q1 has no electric field against it. इस पॉइंट चार्ज Q1 के अगेंस्ट में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. there is absent an electric field against this point charge. ये बिंदु आवेश के अगेंस्ट में कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिर्फ इसी पॉइंट चार्ज का है. here is electric field only for this point charge but not against it. इसके अगेंस्ट में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. so work done by this point charge Q1 will be 0. right here. then the work done by the first charge Q1, the first charge Q1 W1 will be 0, will be equal to 0. We can write here, as there is no electric field, as there is no any electric field against the charge Q1. so work done by it will be equal to 0. We can write this equation 1. इसको equation 1 मान लेते हैं. next we find the electric potential due to this charge Q1. right. We write and the
electric potential electric potential due to charge q1 due to charge q1 at the point p1 is we write v1. You know that expression for electric potential is given by 1 by 4 pi epsilon naught into q by r, the distance. So here will be the constant term 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity, absolute permittivity, into the charge at the point p1 is q1. So there will be q1 and the distance. The required distance is r1 2. So this is the electric potential at the point p1. So we find the amount of work done. We write this equation 2 times the amount of work done required to move the charge q2 from infinity to the point p2 is or will be W is equal to Q. This is so since V is equal to W by work done by charge, work done per unit charge. Here Q, the amount of charge is Q2, so it will be Q2 and potential is V1, so it will be equal to Q2 V1. And it will be equal to work done this is the work done by the second charge Q2, so it will be written as W2. We can write here using V1 from 2 Q2, we use the value of V1 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R12. Then it will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught and the value of V1 Q1 Q2 by R12. We can write here using equation 2. This is the amount of work done by the charge Q2. So the total work done, net amount of work done in first equation, first W1 was 0 and here W2, we write this equation 3. W2 work done by the charge Q2 is 1 by 4 pi epsilon naught into P1 Q2 by R12.
as the, we write here as the work done is stored, work done is stored as the potential energy PE, potential energy of the system. We have the system of 2 point charges, so we can write here Q1 plus Q2. Work done is stored as the potential energy of the system, potential energy of the system Q1 and Q2. So we can write U is equal to potential energy W1, W2, and finally it will be equal to value of W1 is equal to 0, so it will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by Q1 Q2 by R1 2. Potential energy, electric potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R1 2. So this represents the required expression of electric potential energy for the system of 2 point charges. Similarly, we can find the expression for electric potential energy for the system of 3 point charges, and so on. We can find the electric potential energy for a system of n point charges. So this is the electric potential expression for electric potential energy. तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा? We have understood about equipotential surfaces, and we have seen the sketch of equipotential surfaces in the 2 cases. First was equipotential surface of a positive point charge, and the second sketch was equipotential surface of 2 equal and opposite point charges. In first cases, the concentric spherical surfaces represent the equipotential surfaces, and in the second cases, the dashed curve represent the equipotential surface. Then we have understood, we have learned the properties of equipotential surfaces. There are 4 important properties of equipotential surfaces. We have also learned about the potential gradient, relation between electric potential and electric relation. We have learned the relation between electric field and electric potential. It is given by E is equal to minus dV by dr. It means this dV by dr is also called potential gradient. It means change in the potential gradient is defined as the change in the magnitude of the potential per unit displacement. So by this relation का उपयोग हुआ in the important properties of equipotential surfaces. It means for a strong electric potential, for a strong electric field, जहाँ पे strong electric field होगा वहाँ पे electric potential surfaces very close होगा, और जहाँ पे weak electric field होगा वहाँ पे equipotential surface further apart होगा. The 4th properties of equipotential surface was no 2 equipotential surfaces can intersect each other, just like no 2 electric lines of force can intersect each other. Here also no 2 equipotential surfaces can intersect each other or cross each other. And here this is the expression for equipotential surface potential energy
फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो आज के वीडियो में जो हम लोगों ने समझा उसको आप उसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में। जहां पर कोई प्रॉब्लम हो फिर क्वेरीज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके